बड़ी कॉफी टेबल बुक थी जो बहुत सुंदर थी। उसको मैंने खोला, आई थिंक इट वॉज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसको मैंने खोला और वहां पर एक लाइन लिखी हुई थी, वो ऋग्वेद की लाइन थी, ऋग्वेदा, जो शायद तब लिखी गई थी जब जो आर्यन थे वो हिंदुस्तान आए नहीं थे, वो कहीं कैस्पियन सी के पास थे। It is so predated that it is even difficult to find out what is the era in which it was written. And उसमें लिखा था, ऋग्वेद में एक हिम ऑफ क्रिएशन है, बाद में मैंने बाकी सब भी पढ़ा मगर इससे शुरू किया था। वो लाइन थी, then even nothingness was not. Then even nothingness was not. I think for years and years I was trying to think of the depth of this line. अब कुछ भी इमेजिन कर लो, ये दुनिया नहीं थी, जैसा इन्होंने कहा कि ये दुनिया नहीं थी, कुछ होगा, तो I try to imagine nothingness. Nothingness क्या हो सकती है? हो सकता है there is a blackness, वो भी नहीं था. So then I realized I'm not being able to imagine that situation. When nothingness is also not there, then even nothingness was not. Decades later, I found myself directing a film called Rockstar. And I wanted to travel through a road with the character where I could not recognize the depth of the path that I was walking, because the character was moving through that journey, you know. तो जॉर्डन को घर से निकाल देते हैं और वो कहीं चला जाता है, और वहां जहां वो जाता है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट द रिफ्रेन इज, इफ यू नोटिस, देन इवन नथिंगनेस वाज नॉट। जब कहीं भी कुछ नहीं भी नहीं था। Stories have a strange way of finishing themselves. जब कहीं भी कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था, which you just heard the Lanka musicians singing. So this story also brought me to a situation where one day रहमान sir and I were talking. एक तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यार ये आदमी, ये हमारी फिल्म का म्यूजिक करने वाला है। उन्होंने बहुत पहले मुझे सीक्रेटली चेन्नई बुलाया और उन्होंने बोला कि मैंने कुछ कंपोज समथिंग, यू जस्ट हियर इट। सो देन आई सैट इन हिज स्टूडियो एंड आई हर्ड इट। सो देन ही सेड, व्हाट डू यू थिंक? आई सेड इट्स फैंटास्टिक। So he said, he looked at me, he said, you sure? So I said, you know, Rahman sir, I've never heard a bad song from you, you know. So right now, I'm thinking that this must be good, no? This has to be good because it's your song. So he looked at me with a lot of concern. And he said, no, that's not, you are director, no? You're director. You will have to direct me, no? You like it or not? I said, yeah, I like it. He said, okay, fine. We'll think of more music. And then he came up with so many tracks. And then we finally came down to Kun Faya Kun. But in Rockstar, I will not torture Mohit. आप टेंस मत होगी भाजी। नहीं, पर उससे पहले आप बता रहे थे ना कि आपने उनसे कहा था रॉकस्टार बनाएंगे, पर फिर आप कोई और पिक्चर बनाने लगे थे। So मैं बहुत पहले उनसे, क्या हुआ है ना, मेरी जिंदगी में मेरी सारी पिक्चरें बहुत रिजेक्ट हुई है। मतलब मैंने जो बनाना चाहा वो नहीं बनी, फिर कुछ और बना, फिर ये सब होता था। So there was a time that I was going to make Rockstar. This was before Jab We Met. Okay.
At that time, I was also trying to make Highway. At that time, I was also trying to make um, Cocktail and many others. Anyway, तो मैं रॉकस्टार के सिलसिले में somehow I was in Chennai talking to Rahman sir for the first time. So Rahman sir, in his disarming way, said, "What is the film about?" So I said, "It's called Rockstar." So he said, "It's about rock music." I said, "We'll have to figure that out, sir. But I can tell you the story. So he said, "Okay, tell me what happens." I said, "There is this boy, he lives in Delhi. He wants to be a musician." ऐसे मैं बोलता गया मगर कभी कभी ऐसे होता है ना कि आप बोल रहे होते हो बट आपको मालूम है you're not being able to say what the hell has to be bloody said. So I was in that situation, and I was talking to Rahman. Not that I was nervous, but I had already pre-committed to tell a story which I didn't believe in. Then I stopped in between. And then I said, "Sir, the movie begins with this couplet. कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस." उनको तो हिंदी भी नहीं आती. But the fact is, he got hooked to that. He didn't understand it. Like many of us did not understand the wonderful Gujarati storytelling that you did. But we still got hooked onto it. So I knew that moment from the look of his eyes, this man is going to do this film. He says, "What does it mean?" And I said, there is this Persian concept that when people die, their bodies are left for the birds to prey on them and, eat the flesh. And that is how, they cremate their dead, so to speak. So, this person is saying, this is like the lover is saying to the birds that you eat all my flesh. You pick up all the pieces and enjoy them, but don't eat my eyes, which are still waiting for the beloved. This is not a line written by either me or Irshad. It's been written by Baba Farid. The blessings of so many people are with you sometimes, and they manifest in this way, not through any magic. That I said this and Rahman sir was in. And then in 2 minutes he said, "Okay, you can go back to Bombay. I'll get back to you." And then he did the film. And then we were in this, and then Rockstar didn't happen, as Mohit was saying, and then I was making Jab We Met. Jab We Met happened. I called him. He said, "Hi, what's happening?" I said, "Sir, as you know, Rockstar didn't happen. I'm making another film. And I want to tell you the story. This is about a girl who misses her train and then he said, okay. And then he disappeared. He never says no. He disappeared and then over a period of time I realized that ये तो होने वाला बात नहीं है. मैंने प्रीतम को ये सब कुछ नहीं बताया था पहले. आप लोग भी मत बताना. Then I started making Love Aajkal because Rockstar was still not getting made, and then again I called Rahman sir. अच्छा पिछली बार मुझे he asked me, "You're not making Rockstar, huh?" I said, "No, sir, I'll make it, but in the Love Aajkal." Love Aajkal, sir, this is about two people meeting and saying that they don't want to be together, and then from there, what happens. तेरा मुझे कैसे दूरियां कर जाने वाली हैं. This is the story. Okay, you're not making Rockstar? I said, "Sir, I'm just seeing maybe people are a bit like, they think, I don't know, people don't find the story that appealing. They feel it's a bit tragic and all that, heavy." So again he disappeared. The third time I called him, I said, "Sir, I'm making Rockstar." So that is the time that we got into this predicament that all of the songs are going to be sung by Jordan. It has to be one voice. Now it's a very, very big decision.
कि हम who do we cast as this voice? It's even more important than who you cast as the actor, because रॉकस्टार है तो उसकी म्यूजिक होगी, फिर वो सारे गाने होंगे, सारे गाने एक ही सिंगर के होंगे, तो मतलब बहुत बड़ा रिस्क है यार, ये कौन होगा। और हमें वैसे, सो देन लकीली फॉर मी, मोहित यू शुड नो, रहमान सर सजेस्टेड, व्हाट अबाउट मोहित चौहान? बिकॉज वैसे भी रहमान सर को मैं क्या सजेस्ट करूं कि कौन सिंगर होना चाहिए, कुछ गलत बोल दूंगा तो फिल्म करना छोड़ देंगे मेरे साथ। सो ही सेड व्हाट अबाउट मोहित चौहान? आई सेड आई एम जस्ट कॉलिंग हिम राइट नाउ एंड देन वी कॉल्ड हिम, and then two songs by that time he had already made the scratch of. The first one is, I think, the song that, the only song that perhaps, maybe Duriya also, but the only song that I really like from my films, and that is Phir Se Ud Chala. But the scratch of that, जब मैं वापस बॉम्बे आया, then मोहित के साथ, जब तक मोहित थोड़ा बहुत भाव देने लगे थे मुझे, और तो मैंने इनको सुनाया, दोनों ही गाने सुनाए। दूसरा गाना था जो भी मैं कहना चाहूँ। तो इन्होंने कहा बाबा जी ये वाला जो है ना, ओ ये गाना सही है, तो दूसरा वाला है ना, आप हरिहरन से बात क्यों नहीं करते? डू यू रिमेम्बर दिस? तो बहुत ज्यादा वैसी है ना कारीगरी है, मैं मतलब उस तरह का सिंगर नहीं हूँ ना मैं, मतलब अब हरिहरन से बोलो वो सारा कर लेंगे ऐसे। दैट्स द पॉइंट बाबा जी, हमको ना एक ही सिंगर के साथ सारा एल्बम बनाना पड़ेगा। बट ही sang it and we had a memorable time with that. So मैं जानता हूँ कि आप फिर से उड़ चला शायद अभी ना गाना चाहें, मगर लेकिन मैं ये तो गा सकते हैं। मैं खाली इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो पहला मुझे गाना भेजा, तो रहमान साहब ने उसको एक जैम की तरह बनाया हुआ था। तो वो गाना मेरे ख्याल से 8 या 9 मिनट का था। तो मुझे लगा यार ये गाना शुरू कहाँ हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है, और इसमें तो बहुत चीज़ें हो रही हैं। फिर उतने में इन्होंने दूसरा गाना भेज दिया मुझे, वो और भी टेढ़ा, और फिर उसके बाद तीसरा, और फिर तो मैंने इनसे घबरा के वही बोला, मैंने कहा भाई पता नहीं लोग परेशान हो जाएंगे, लोग बोर हो जाएंगे, आप मुझे इतने सारे गाने दे रहे हो। बट ही ट्रस्टेड मी एंड रहमान साहब ट्रस्टेड मी, एंड आई थिंक रॉकस्टार वाज अ रियल माइलस्टोन इन माय म्यूजिकल करियर। ऐसा प्रोजेक्ट कभी मिलता नहीं है फिल्म में किसी को, आजकल तो इम्पॉसिबल है। और उसमें मुझे एज एन आर्टिस्ट मुझे एक्सप्रेशन देने को मिला, हर तरह का खूबसूरत गाना, और लोगों ने उसको बहुत बहुत प्यार दिया, फिल्म को भी और गीतों को भी। थैंक यू सो मच आप सबका। Incidentally क्या होता था when we were recording for Rockstar, Babaji, you know that Ranbeer used to come for the recordings. He used to come for the recordings to Chennai because he wanted to, because it was the story of a singer, and he wanted to own it as much as possible. So like I had to ask him to come and see all recordings. जब भी मोहित गा रहा है, it should be like this soul and that body. So he was always there. Now, since he was there, it's not only the singing or the style of singing. When you see him performing on stage, when Ranveer performs on stage, he has the background of having been through every take of singing that Mohit has done. And apart from that, he also borrowed various other things into the personality of Janardhan Jakhar. One is the high-pitched laughter. Like that, that kind of laughter, it's basically Mohit Chauhan's. And many other things that Mohit does in his personal life were also then became a part of Rockstar and Janardhan Jakhar. छोटा सा एक वो ऐड करता हूँ, हम जो पहला गाना हमने बॉम्बे में रिकॉर्ड किया था, रहमान साहब का जो स्टूडियो है पवाई में, और वो स्टूडियो उसी टाइम उनका फ्रेश बना था, और उसमें उन्होंने कभी कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था उस टाइम तक।
तो हम लोग स्टूडियो में थे, मैं, आप, रणबीर, इरशाद और जगह भी नहीं थी, हम लोग सब एकदम कुछ हाँ, जमीन पे ऐसे था, जमीन पे कोई बैठे ऐसे हुए। टेबल पर लेटा हुआ था। हाँ, मतलब हम आप तो पिकनिक खड़े होके गा रहे थे। लेटना चाह के भी नहीं लेट सकता था। तो वो बूथ में मैं खड़ा हो गया गाने के लिए, और अभी फिटिंग्स वगैरह उसमें कुछ हो रहा था काम। तो हम लोग गाना गाने लग गए, मैंने उन्हें बोला आप शुरू करें, कुछ गाते हैं, जैम करते हैं। तो एक ऊपर बल्ब था, वो बार बार फ्लिकर कर रहा था। तो रहमान साहब ने उसको नोटिस किया, बोलते हैं भाई मेरा तो नया स्टूडियो है, ये बल्ब कैसे फ्लिकर कर रहा है, होना नहीं चाहिए। तो उन्होंने उसको बुलाया किसी को, उसने ठीक ठाक किया, फिर से बैठ गए। 5 मिनट बाद गाते गाते फिर से फ्लिकर करने लग गया। तो रहमान साहब ने कहा ये इट्स अ गुड साइन, यू नो, इट्स सम गुड एनर्जी गिविंग अस अ साइन दैट्स गोना बी ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाट ही सेड। एंड दैट फर्स्ट सॉन्ग came out beautiful, and then the second one, third one, or yeah, thank you so much. Yeah, come on, but you can pay back by, you know how. I have to sing for my dinner. पास मेरे हो तुम यूं, जितना महसूस करूं तुमको, उतना ही पा भी लूं। तुम हो मेरे लिए, मेरे लिए हो तुम यूं, खुद को मैं हार गया तुमको, तुमको मैं जीता हूँ। ओ ओ ओ तुम हो। Thank you.